Imtiaz, welcome, and it's been a pleasure. Like I said, it's been a beautiful journey. इस गाने की कुछ खास बात हमें बताएं, हवाएं के बारे में. We'd all love to hear. आप लोग सुनने के लिए रेडी हो? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग यहाँ पर आए हैं. ये हमारा चौथा गाना है, पांचवा गाना है जो हम इस तरह से रिलीज़ कर रहे हैं. और आप लोग जो पहले गाने आए हैं आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया है, बहुत खुशी की बात है. और ये जो गाना है इसका नाम हवाएं हैं. और ये लड़के और लड़की के बीच में जिसको रोमांटिक गाना कह सकते हैं वैसा गाना है. और हमने जगह भी ऐसी चूज़ की है जिसमें हवा काफ़ी चल रही है, जैसा कि आप देख रही हैं. तो बिल्कुल, आज ऑल द लेडीज आउट देयर, अपने बालों को संभालना बहुत डिफिकल्ट होते जा रहा है. करेक्ट, वहाँ भी बालों को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था, मगर हमने किसी तरह से संभाला. वहाँ ठंड बहुत थी, यहाँ इतनी ठंड नहीं है. ये गाना हमने ज़्यादातर वहाँ पे बुडापेस्ट में शूट किया है. एंड आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इंटीमेट सॉन्ग बिटवीन Harry and Sejal in this movie, which is called Jab Harry Met Sejal. क्या बात है, fantastic. So, guys, are you all ready to meet Harry and Sejal? Louder, yeah. Come on, ऐसे थोड़ी आएंगे. Yes, everyone. All right, please put your hands together. Oh, all right. So Imtiaz sir would like to call them, please. Arey, that was quick. That was absolutely quick. Please give it up for Shah Rukh Khan and Anushka Sharma, everybody. Good evening, everyone. All right, thank you so much, everybody. Thank you. 1 minute. We are going to have a photo op. Please. We'd love to hear your story, Sejal. आपके डांस स्टेप ने तो कमाल किया ही है, सेजल समझाया है. लेकिन ये बताएं, शाहरुख खान के साथ ये आपकी तीसरी फिल्म है. How has the experience been? Good evening, everyone. I have to shout over Manoj's voice because he's shouting. पहली बात तो welcome everybody. Thank you for being here. आज हमारे गाने का launch है हवाएं. And more than the song launch, I think this evening is for us to all be together. And welcome Shahrukh, who's come back now. विदेश से वापस आए हैं. And to just have a great time. So please enjoy yourself. And you're all looking beautiful. I love what you all are wearing, all the women. Lovely. And yeah, just have fun and enjoy the song that's going to play out in some time. क्या बात है. Thank you so much, Anushka, and of course, Shah Rukh Khan, everybody. Thank you very much, everyone, for being here. जैसा अनुष्का ने कहा, इम्तियाज़ ने कहा, नॉर्मली जब भी हमारी फिल्म रिलीज़ होती है तो हम उसको एक सेलिब्रेशन की तरह लेते हैं और वो सेलिब्रेशन आप लोगों के साथ ही सबसे बेहतर होता है. सो ऑल दीज वेन्यूज़ एंड ऑल दीज लॉन्चेस वी एक्चुअली पे एक्स्ट्रा अटेंशन टू इट, नॉट इन टर्म्स ऑफ द मार्केटिंग जीनियस दैट आई एम, बट इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि आप लोग इन्जॉय करें. सो उम्मीद है, लव स्टोरी है फिल्म, बहुत सिंपल लव स्टोरी है. मैं आज इम्तियाज़ को सुबह तंग कर रहा था. मैं 6-6:30 बजे सुबह पहुंचा. मैंने फ़िल्म देखी और मैं इसे तंग कर रहा था ये बोल के कि मैं सबको कहना चाहूँगा जब ये फिल्म देखने आएँ तो साथ में अपना दिल ज़रूर लेकर आएँ, बिकॉज दैट्स द काइंड ऑफ फिल्म इट इज़. जस्ट ब्रिंग योर हार्ट अलॉन्ग, वॉच द फिल्म, एन्जॉय इट. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप विच नॉर्मली इज़ रिलीज्ड इन अ लव स्टोरी विच इज़ अ लव सॉन्ग. बहुत खूबसूरत लव सॉन्ग है, बहुत सिंपल लव सॉन्ग है. नाम उसका हवाएं है और आज का जो मौसम है वो ऐसा ही लगता है कि गाने का नाम हवाएं ही होना चाहिए. और बहुत सुंदर तरह से पिक्चराइज भी किया है डिफरेंटली. It's a very cozy song. I hope you all enjoyed. Pritam Da bhi yahan par hai. So I will obviously let the honor of the music being released, or this song at least being launched by Pritam Da,
And I would like you please to welcome him with the loudest claps because he's worked really hard with Imtiaz and Irshad Kamil Saab to make this music. How lovely. Please put your hands together for Pritam Pritam, da. please. And दोस्तों जिसका हमें इंतजार है वो गाना अब हम सुनने वाले हैं. प्रीतम, it's a pleasure. The entire album is so beautiful. खास तौर से इस गाने की 2 लाइनें कुछ बताएं हमें प्लीज. गिटार लेके आऊं? गिटार दे दो यार. Let's hear it. हम बैकअप करते रहेंगे पीछे. आपको हमारे साथ हवाएं गाना पड़ेगा. ओके, कोरस है. आपको गाना पड़ेगा हवाएं हवाएं, ऐसा कर. ये म्यूजिक डायरेक्टर से जो कपड़े पहनाने पड़ते हैं ना, जो मेरे ख्याल से ज्यादा ही हवाएं चल रही हैं यहाँ पर. Guys, it's a new song और मुझे यकीन है कि इस गाने को सुनने के बाद you're going to groove to it too. लेकिन फिलहाल हम थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम में फंस गए हैं. But nevertheless, I assure you जब इस गाने का वीडियो देखेंगे you're going to fall in love with it. और इमेजिनरी हवाएं आपके साथ चलती रहेंगी. आप लोग को मेरे साथ गाना पड़ेगा. जस्ट मैं बोल रहा हूँ कोरस, जब भी मैं बोलूँगा वो गाएंगे. कैसा है? हवाएं हवाएं. ओके, हवाएं हवाएं. कब बोलेंगे हम? You also sing, ना? हवाएं. हवाएं बोलना है. हमें हवाएं बोलना है. तुझको मैं रख लूं वहाँ जहाँ पे कहीं है मेरा यकीन. मैं जो तेरा ना हुआ किसी का नहीं, किसी का नहीं. ले जाए जाने कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए तुझे कहाँ हवाएं हवाएं. बेगानी है ये बागी हवाएं हवाएं. ले जाए तुझे कहाँ हवाएं हवाएं. ले जाए जाने कहाँ क्या मुझको खबर ना मुझको पता. ओ, ओ, ले जाए जाने कहाँ हवाएं हवाएं. ले जाए तुझे कहाँ हवाएं हवाएं. बेगानी है ये बागी हवाएं हवाएं. ले जाए तुझे कहाँ हवाएं हवाएं. ले जाए तुझे कहाँ ना मुझको खबर ना तुझको पता. Woo! क्या बात अभी है. go back to you. Thank you so much Pritam, that was absolutely special. And once more क्यों आप इस गाने को ही देख लेते हैं. Once more, I'll tell Dada to do Safar for us. 4 lines of Safar. Safar के lyrics बताऊँ. Lyrics मैं बताऊँ.
हम आ जाएंगे बीच में, आ जाएंगे। 1 2 3 अब न मुझको याद बीता, मैं तो लम्हों में जीता, कहाँ जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, कहाँ हूँ, इस यंकी से मैं यहाँ हूँ। इधर का ही हूँ ना उधर का रहा, सफर का ही था मैं सफर का रहा, इधर का ही हूँ मैं उधर का रहा, सफर का ही था मैं सफर का रहा, मैं रहा, मैं रहा, मैं रहा, मैं रहा। आगे के लिरिक्स नहीं आते हमको ना। नील पत्थर। मैं इतना वर्जन से जब कंपोज करने के टाइम मैं खुद का लिरिक्स लिखता हूँ जिसका कोई सेंस नहीं होता है, उसके बाद अलग अलग वर्जन होता है लिरिक्स और सब मैं गाता रहता हूँ। फाइनली जब फाइनल मास्टर आ जाता है वो लिरिक्स मेरे को याद ही नहीं रहता है। How sweet is that? Thank you so much, and I'd request all of you all to please step aside ताकि हम जिस घड़ी का इंतजार है आगे बढ़े। And let's watch the 5th song of जब हैरी met सेजल। पहली बार आप सभी के लिए, hope you like it, presenting हवाएं। Shahrukh and Anushka, please. We'd request all of you all to please come on stage and Shahrukh, seriously, how do you do this? How do you make us fall in love with you all the time? Actually, if the girl is as beautiful as Anushka, it becomes very easy. So, my job is easy. I just have to look at her face, and I feel lots of love, and that's how it's out like this. It's beautiful. Okay. Thank you so much. Thank you, and ladies and gentlemen, Imtiaz Ali, Preetham, Anushka, and Shahrukh Khan. We'll have all our friends from the media to ask a few questions. Please have a seat. Guys, dheere dheere. One by one, I'm passing the mic There's on. a mic going to be passed. Hi. The questions strictly have to be only this movie related, guys. I repeat, the questions need to be only related to this movie and the song. Hi, Shahrukh. Shahrukh over here. Hi, this is Sohail on your right पे. हाँ, Sohail. यहाँ. Sorry. Hi. बारिश हो गई और मौसम रोमांटिक हो गया। अब हम छत खोल ही देते हैं यार। मेरा बहुत दिल था ये गाना एक्चुअली बारिश में लॉन्च करें। Oh, great. Everybody should get wet, so माशाल्लाह। Yeah, Shahrukh, you are known as a king of romance. और ये गाना भी एकदम ही रोमांटिक है, very touchy है। How special was this song for you, and what was the experience actually? एक्चुअली मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ सुहेल। जब भी डायरेक्टर्स और म्यूज़िक डायरेक्टर्स मेरे लिए गाना करते हैं तो उनके दिल में कोई एक आई थिंक कुछ रेपुटेशन सी बस गई है कि मेरे गाने अच्छे हैं, जो ऑब्वियसली मेरी वजह से बिल्कुल नहीं है। सो दे ऑलवेज वर्क, आई वोंट से हार्डर, आई थिंक एवरीबडी वर्क्स वेरी हार्ड, बट आई थिंक दे जस्ट हैव अ स्पेशल प्लेस इन देयर हार्ट फॉर सॉन्ग्स फॉर मी। सो आई रिमेंबर ये गाना हमने आखिर में किया और जब भी इम्तियाज़ ने दादा से बोला तो दादा ने यही बोला, आप फिक्र मत करो, ये गाना तो मैं कर लूँगा। So I think it's just come out of love. As we speak also, we are still doing this song for the film. अभी भी चल रहा है इस पे काम, but I think I'm just very fortunate that the music directors, the writers, the director himself,
they really look at me with a lot of love when a love song comes. And like I was telling, जो मेरे सामने जो मेरी महबूबा हैं, जिनसे मैं प्यार करने लगता हूँ फिल्म में, वो इतनी खूबसूरत हैं कि बाकी काम बहुत आसान हो जाता है. Just to express a song like this, so well written and so well choreographed and thought of. Anushka, how is it romancing Shah Rukh every time on the screen? Or maybe like... Extremely easy. You know, he has a lot of genuineness. If you see this song, his eyes have a lot of genuineness when he looks at you in love. So whatever he's saying कि बगल में कौन सी लड़की है, सामने कौन सी लड़की है, वो देख के मैं रोमांस करता हूँ. But in my opinion, Shah Rukh can romance this mic also. And look at the mic with the same kind of love, he would look at the most beautiful woman in the world. As long as you're holding it, I can romance it. Otherwise, no. So it is very easy and it's beautiful for me. I mean, to do a film with him in which I'm doing a romantic film with him and to shoot a romantic song with him, it's a great feeling inside. It feels very good. And then to see it on screen and then Preetam Da ka gana itna अच्छा music दिया है. The song is so beautiful. The lyrics are so amazing. इरशाद कामिल ने जो lyrics लिखे हैं मुझे बहुत बहुत पसंद है. Like मेरे दिल के बहुत करीब है. तो मेरे को बहुत सुंदर लग रहा है गाना, बहुत ज़्यादा. Hello. Hi Shahrukh. I'm Khushbu from Stardust. Say your name again, darling. Khushbu Tiwari from Stardust. Khushbu. Yeah. Closer to the So I wanted to ask you, yeah, is it audible? थोड़ा सा ऊंचा बोलो खुशबू. Yeah. So I was asking, how do you relate yourself to Harinder the character? Actually, इम्तियाज़ ने जब ये कैरेक्टर लिखा था, I think normally directors अपनी ज़िंदगी में से कुछ हिस्से experiences या सोच या समझ निकाल कर कैरेक्टर लिखते हैं. और मैंने पहले भी बोला है and I will say it again, I think इम्तियाज़ जो हैं कोई भी स्टोरी एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा सोचते हैं. What a girl would feel. And what would a girl like a character or an actor or a man to be like? And I kind of, मैं उससे इस बात में बहुत, how do I say, I kind of agree with him emotionally. So there is a lot of us in different ways, not necessarily the experiences that Imtiaz has had and I have had are similar, but somewhere there's a lot of us in Harry. और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम बात करते वक्त समझ भी जाते थे बोलते वक्त कि यार हमारे साथ ऐसा हुआ है ना अलग अलग जगहों पे. So I relate to it a lot. Obviously, you know, when you play a character, the space is different, the setting is different. Maybe we've not been there, but somewhere the feelings are quite familiar to me also, as Shah Rukh and as Harinder. Thank you. Hi Shahrukh, over here. Himesh here. Towards your, yeah. Hi. First of all, the song looks amazing. Thank you. And my question to you is, you know, whenever your film releases, you explore new markets in terms of releasing the film. So what kind of release can we expect from this film as far as the screen count is concerned in India as well as abroad? I'm sorry, I don't know the details because I don't look into it. We have a head Gaurav who does that. But I think a lot more this time. Of course, our traditional territories will always be there. Some of the traditional territories for our films are kind of non-traditional, like Germany and all that we release our films in France. I think we are doing a little more in Europe and maybe South America, I've been made to understand, apart from the traditional markets. And hopefully every day as the film comes closer, I think the new markets that the team with Gaurav heading it and Yash Raj, which is distributing it for us, is looking into it. I don't know the exact screen count, I'm sorry. I can find out, but right now I don't know. Thank you. And Imtiaz sir, you last time said that the film has been censored and given US certificate. Could you say the runtime of the film? The what of the film? The runtime? And runtime. Runtime, yeah. It's 220 Okay. approx. Because the rolling title is still, you know, being done, so it will be a little plus or minus, but you can expect it to be around 220. And yes, we got a UA from the committee without cuts, and we are very happy with their judgment. Hello, this is Josh from Stardust. Hi. I wanted to ask, I think everyone over here liked the, sorry for my voice. I think everyone over here liked the song a lot. What do you think about the movie? Is it going to be that, is it going to match the song or is it going to be even better? What do you think, any of y'all? It's a nice question, Josh. Thank you.
All three of them. This is okay. See, I'll tell you honestly. मैंने कल देखी है फिल्म, अनुष्का ने भी देखी है, इम्तियाज हर रोज देख रहे हैं. I think most of the team here has seen it. You actually, when you reach this stage of filmmaking, because we are all so involved in it, I think Anushka, not only as an actor, as a friend, also somewhere at the back of her head, being a producer herself, Dada, because day and night we are sitting there. Imtiaz, of course, has to be the most involved, and he is, round the clock. I think you lose objectivity, you know, when you're so close to it. So it's like your baby. I mean, if you ask me, is Abram more beautiful than we think he is? I'd say yes. But that is a bias. And that's how we all believe about the film right now. It's our baby. It is more beautiful than anything in the world. And God forbid, if it is not as beautiful, it'll be even dearer to us because we love it so much. So for us to be able to say it openly, मैं मार्केट के अंदर आके बोलना शुरू करूँ, सुपर हिट पिक्चर है, मिलिट्री बुलानी पड़ेगी, पागल हो जाएंगे लोग, एडवांस ये है. I don't know. I hope all that happens. I really wish, because we're all into the business also. I really hope to God. And I really pray. It's a very simple love story. I hope a lot of people like it. That's the bottom line all of us want. So I don't know if it is better than what it's looking like or it is worse. It's a nice film, yeah. Just like I said, bring your heart along, you love it. Hi, Shivangi this side from Aaj Tak. On your left. Here. Hi. So सबसे पहले You look very nice with this, yaar. Thank you. सबसे पहले congratulations, गाना बहुत खूबसूरत है और हम सभी को बेहद पसंद आया है. दूसरी बात, जब भी रोमांटिक गाने की बात आती है तो चेहरे की बात होती है, हुस्न की बात होती है, लड़का लड़की की तारीफ़ करता है या फिर लड़की लड़के की तारीफ़ करती है. किसी ने कभी सोचा नहीं था कि हवाएं शब्द से कोई रोमांटिक गाना इस तरह से बन सकता है. तो ये आइडिया किसका था और ये शब्द कैसे ईजाद हुआ या आपके गाने में कैसे आया? गाने में हवाएं जो शब्द है वो इरशाद कामिल की तरफ से आया है. बिकॉज कुछ ऐसे हालात हैं गाने के आसपास जो इस रोमांस को हवाओं से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली पता नहीं होता कि हवाएं कहाँ से चल रही हैं और कहाँ को ठहरेंगी. तो इनकी जो रिलेशनशिप के हालात उस वक्त थे वो ऐसे थे, और वो आप जब पिक्चर को आगे देखेंगे तो समझ में आता है कि अच्छा हवाएं किस तरफ बह रही हैं. सो हवाएं का ये है. और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आपने इस चीज़ को नोटिस किया कि वो एक अलग सा शब्द है जिसको हमने रोमांटिकली यूज़ किया है. मगर वैसे देखा जाए, जब हम लोग यहाँ आए थे तो इस वेन्यू में जब हवा चल रही थी तो कितना रोमांटिक फील कर रहे थे. तो होपफुली आप भी उतना ही रोमांटिक फील करेंगे जब फिल्म का ये गाना देखेंगे. Thank you so much. Hi Shahrukh, this is Mini from India Today. Wonderful song. You'll say your name again, please. Mini Hi, from Mini. India Hi. Today. Wonderful song, firstly. And since it's a love story again, people love to see you in that avatar. We have always been loving you in this genre. And I'm sure all the wives and girlfriends out there would be asking their husbands and boyfriends to learn from you. But on the contrary, we have repeatedly heard you saying that you are not so fond of this genre and you really don't like love stories. So do you think somewhere this image of yours pose as a biggest strength and it acts in your favor and things never go wrong with मैं such love controversial stories? बात बोलूं. I love making love. I don't like watching it. अच्छा है ना ये? हाँ, कि मुझे making love is happier than just watching it. तो मैं देखता नहीं हूँ, मैं करता हूँ. But then do you think it always acts in your favor? It never goes wrong, and probably with Harry Met Sejal too. तो क्या प्रॉब्लम है, करने दो ना मेरे फेवर में. अच्छा ही है ना अगर लोग प्यार कर रहे हैं. बट जेन्युइनली मैं बताना चाहता हूँ, इट्स नॉट कि आई डोंट लाइक लव स्टोरीज. आई थिंक थोड़ा मिस इंटरप्रेट है. इट्स जस्ट दैट द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, आई एंजॉय कॉमेडी मोर बिकॉज आई वुड लाइक टू बिलीव आई एम अ बॉय. तो मुझे एक्शन बहुत अच्छा लगता है. लव स्टोरीज भी बहुत अच्छी लगती है, एंड आई सी अ लॉट ऑफ देम बिकॉज ऑफ माई डॉटर नाउ. ऑल ऑफ देम. वो क्या है, 21 days, 27 ड्रेसेस, 13, सब चीज़ें देख चुका हूँ मैं, और मुझे बहुत खूबसूरत लगती हैं. एंड आई जस्ट टेल यू अ मोमेंट. मैं यही गाना कर रहा था, एंड फॉर मी द मोस्ट टचिंग मोमेंट ऑफ द फिल्म इज़ कि मैं कर रहा था तो इम्तियाज़ ने कट नहीं कहा. एंड आफ्टर आई फिनिश सिंगिंग एज मच एज आई रिमेंबर, जस्ट लाइक दादा, द लिरिक्स एज मेनी एज आई कुड रिमेंबर, इम्तियाज़ केम एंड शुक माई हैंड एंड ही सेड, यू नो, इट्स रियली नाइस. आप अभी भी प्यार वैसा ही करते हो जैसे आपने शुरुआत की थी. इट्स रियली नाइस टू सी यू लाइक दैट. I feel these things. I genuinely do. It's not that I'm acting it out. Of course, I feel being bad also in movies. I feel being other scenes also.
But I guess something just works in this. By some chance, some of the films that I've done, which have been love stories, have done so well, and people have loved them for so many years. I think एक ऐसा माहौल सा बन गया है. I like it. I love doing love stories. मुझसे उस दिन हम जब फिल्म शूट कर रहे थे, अनुपमा चोपड़ा ने पूछा था कि आप again lover बन रहे हो. I'm no longer a lover. I am love. I genuinely feel that in a good way. I'm not being pompous. I am love. I feel it. I understand. I like to analyze it. I like to sense it. And somehow that comes through, I guess, in the movies. And I'm very fortunate that you have a director like Imtiaz. You have an actress like, because I'm very shy. So if you have a friend like Anushka with you, it helps open up. You have music directors and composers who are giving it so much more than I can perhaps bring to the table. So it's a fortunate effort of my team. I think they also like making love. They just don't say it. I'm sure we all too. Hi, Shahrukh. Shahrukh bhai, towards your left यहाँ पे. Shahrukh bhai, what's the news for the Diplo news? उसका क्या news है? I mean, when it's going to Sorry? The Diplo song जो आने वाला है. What's the news about that? Dada and him have collaborated. मैं LA में था, मैं सुनकर आया और I think it's just been given its final touches now. अभी वो हो गया है, तो Dada will tell you about it. Well, that song is going to come next, and it's a very exciting song because Diplo का एक ट्रैक था पिंचर्स एगोनी बोल के द इंस्ट्रूमेंटल द ड्रॉप वाज वेरी वेरी एक्साइटिंग. इम्तियाज जब वो ड्रॉप सुना तो बोला कि वी वांट टू यूज दैट इन द फिल्म इन दैट ट्रैक. देन आई कंपोज्ड ऑन दैट ट्रैक एंड देन आफ्टर द देन इरशाद भाई रोट हिज फेवरेट लाइन फुर. So and the purr works very well with the drop because you know it's so much to the film, and also it has a lovely sound and ring to it. So after doing that, after the composition, Mohit dubbed, and then we sent the entire dubs back to Diplo, and again he produced it and again sent it back. So there's a collaboration in like it should happen is going on. We are just going up and down on tracks, and I'm very very happy to collaborate with Diplo and the song comes in a place which is, I don't know if I'm saying the right word, but coming of age, feeling of freedom. As a matter of fact, the direction that Imtiaz had given us during the song, it's basically a song about Anushka's character flying free, coming of age, realizing that there is more to life than she has experienced, and it's like a flight she takes off. हमको बार बार इम्तियाज़ बोलते थे, it's like बेहोशी का आलम, मदहोश हो जाए जब आदमी. So I think that's what it kind of signifies in the film. And purr is purr, I think उड़ने को बोलते हैं, हवा में purr हो जाता है. So she's flying. बहुत बहुत interesting गाना है, और मैंने छोटा सा वीडियो के अंदर पार्ट भी करके आया हूँ, ये वाली स्टेप. ऐसा बड़ा कूल स्टेप करके आया हूँ मैं, ऐसा करके वहाँ पे. Hi Shahrukh, to your right. Here, Neha from Bollywood now. Here. Hi. अच्छा, किसी ने अभी कहा कि girls want a boyfriend like शाहरुख. बीवियाँ ऐसे बोलती है, आप शाहरुख जैसे रोमांटिक क्यों नहीं हो? कभी गौरी ने आपसे कुछ कहा है कि आप अनरोमांटिक हो? How are you? Are you a romantic husband? यार मैं ठीक ठाक हूँ. आई थिंक मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है. अभी मैं बड़ा शाय हूँ यार ये बातें करने के लिए. बट आई थिंक आई एम गुड कंपनी. I'm good company, I think. I can make you smile, make you laugh, listen to what you say. Yeah. I think, कैसे बोले यार? Yeah, I'm good. Hi, Preetam. Preetam. अरे मुझको शर्मिंदा मत करो यार तुम प्लीज, मैं बड़ा शाय हो जाऊंगा मैं. नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है. वो बस एक बार जब बाजीगर में मैंने छत से लड़की को फेंका था, उसके बाद उसने अपना मुंह नहीं खोला. ये जोक है प्लीज. हाँ, इसको रॉन्ग मत लीजिएगा. हाँ, जो भी. शाहरुख सर ऑन योर राइट. मैंने उसको बोला मैं अपने रोल्स बड़ा फीलिंग से करता हूँ. ये ऐसे ही जोक है प्लीज. हाँ, कोई भी बुरा नहीं मानना इसको प्लीज. बिल्कुल जोक है, प्योर जोक. #joke.
Imtiaz, Justin here towards... प्रीतम, मेरा आपसे सवाल है. My question is to you. This is Shilpa. थोड़ा सा अलग है. रिसेंटली ऋषि कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अनुराग बसु को ये बिगिनिंग ऑफ द मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा अलग है. हाँ, इतना ज्यादा अलग है कि हमारी कल्चर इतनी अलग नहीं है. उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ बाहर, लाइक आफ्टर दिस, और यू कैन कॉल मी एनी टाइम, एनी टाइप ऑफ थिंग. Shahrukh sir, on your right. Justin here towards your right, near the bar. I mean here. Yeah, Justin, hi. Imtiaz, when you're working with Shahrukh, especially in a romantic film and shooting a romantic song, is there a temptation to use the typical Shahrukh Khan-ness that the audience has been used to for over 25 years? Well, I was very aware and also made aware of the typical Shahrukh-ness when I went to shoot. I have known him personally also over years, so I had already an impression about this man and this actor. I've also seen many of his films and admire them and admire him as an actor. But when I was working, I wasn't either trying to create that Shahrukh-ness or trying to tell him to not come up with it. Because I realized that the Shahrukh-ness is a byproduct of the Shahrukh. And it's unnecessary and kind of stupid to tell him not to be himself. Actually, we didn't worry about it at all. And yes, I'm glad that you asked that question. It's a smart question. It's the honest truth is that I was made aware of it, but I didn't either find it, nor did I combat with it, nor did I try for it. Shahrukh, also just continuing, did you miss the quintessential stretching of arms pose in the film? Because we have seen it film by film that you do it. I think, Justin, it's oversimplification. You know, it's a thing now. As a matter of fact, I would myself play to the galleries when I'm supposed to do that. It's not something I do because that makes me or breaks me. You know, I've done it in a few films, and it's become a thing. You know, it becomes like a mannerism of an actor. If I'm told in a film, actually no director ever tells me, "ऐसा नहीं करना." Because they know मैं ऐसा नहीं हूँ कि छूटते ही हाथ फैला देता हूँ. मतलब क्या सेट पे आती हाय एक्शन ऐसा थोड़ा है. मतलब so मैं ऐसा करता नहीं हूँ. कभी कभार मजाक में या जैसे फारा हैं डायरेक्ट कर रही हैं, शाह we'll do that. As a joke we sometimes say, okay, we'll do it in the film, and you know, it's been a long time. I think if a character of Rais is not meant to do it, I'm not going to break out into it. I think given the parameters of commercial cinema that I act in, I still try to retain the characterization as strongly as I can, knowing the fact that the star sometimes overrules the character. But in my heart, I'm still an actor, however small, minuscule, or unimportant part as an actor in a film. So I don't give vent to कि मैं ये करूँगा. अभी वो ज़रूरी नहीं होता. Fan के अंदर, it is meant to be. He's a fan of the motive of a star called Aryan Khanna, who's perhaps Shah Rukh Khan, but not necessarily in every film. यार ऐसा नहीं है कि मेरे को हाथ बांध के रखने पड़ते हैं कि हाथ बांधे रखो वरना खोल देगा. ऐसा नहीं है. Shahrukh sir, on your right, sir. Shahrukh sir, on your right. This is Sonal from Midday. So on your right. Here. Hi. Sir, actually you became a guest editor for one of our sections called The Guide. You know, and it was received really well. So how was the feeling like to be one of us, you know, to become an editor for a day and, you know, do what we do day in and day out? It was very nice here. Of course, your team helped me a lot. और बहुत मज़ा आया. मिड-डे का मैं टूर गाइड बना. हालांकि मेरे को मुंबई के बारे में इतनी जगह नहीं मालूम है. इम्तियाज़ और अनुष्का के साथ करो तो और भी अच्छी जगह बता सकते हैं. And to be very frank, I have done a journalism course in my mass comm. तो ऐसा नहीं है मैं बिल्कुल वंचित हूँ from understanding mass communication and the job that you do. I have a huge amount of respect for it, and I say this from the bottom of my heart. I know sometimes we have to do things that we also personally don't like, but we all have to sell an idea, we have to sell a dream. So I really enjoyed it here. I wish I could do it. I used to write for a newspaper also for a bit, and I'd like to do it once again, but I take time writing. But it was really good being a journalist for an evening. Anushka, my question is to Shahrukh sir and Anushka both. So you've worked with a lot of different directors who are known to give a flavor to romance. So what do you think is different in Imtiaz's concept of romance? So this is what I feel.
whenever I watched his films, I think his films are, yes, they are love stories, but I don't think that the characters are aware that they're in love. In fact, I feel that there's some sort of internal travel that happens, like the soul searching, and they understand themselves a little better, and then they realize that this happened because of the existence of this other person that came into their life and elicited this feeling in them. And that's when they discover love. Usually in films, in love stories, that's what happens, right? You know that it's very obvious that there is love, or that's, or the expression of love is very obvious. In his films, it's very latent, and it builds up. So I feel we feel it with the characters, you know, and I think that's what makes his films really special and something that we all connect with. And moments that he creates in his films, which are something that, you know, we might have experienced with our own loved ones, but you don't get to see that on screen so often. So I think he has a very deep understanding of a man-woman relationship. Anushka, hi, Shahrukh. This is going to be the last question. My question is to both Anushka and Shahrukh. मेरा सवाल आपसे है कि हवाई सॉन्ग last question. It's going to be the last question. Okay, let the lady say, then the boy. कहाँ है मेरे को दिखने? आप शुरू आप बोलो. अनुष्का, मेरा सवाल आपसे है कि हवाई सॉन्ग रोमांटिक है, शाहरुख आपके साथ थे, लेकिन क्या पर्सनली आपने रोमांटिक सॉन्ग में किसी को मिस किया? We didn't get that. Can you repeat the last part, please? लेकिन पर्सनली आपने कितना एंजॉय किया और किसी को मिस किया? हवाई सॉन्ग काफ़ी रोमांटिक है, आपने शाहरुख के साथ सॉन्ग किया, लेकिन पर्सनली आपने किसी को मिस किया सॉन्ग के दौरान? Yeah, I did actually. Irshad Kamil. I wish he was here because उन्होंने कितने अच्छे लिरिक्स लिखे हैं. 2 बार मुझे लगा भी, जब ये मुझे देख रही थी कि इरशाद भाई को देख रही थी, मुझे ऐसा फीलिंग आया. मैंने बोला तुम्हें यार, वो जब वो ऐसा एक बार उसने जो लुक दिया ऐसा करके. शाहरुख, आपसे सवाल है कि सलमान ने हाल ही में शूट किया आपकी फिल्म के सॉन्ग को, कितना स्पेशल है सॉन्ग? आनंद एल राय की फिल्म के लिए सलमान ने शूट किया, कितना स्पेशल है सॉन्ग? क्या पार्ट होने वाला सॉन्ग है या स्पेशल अपीयरेंस है, जैसे आपने ट्यूबलाइट में किया? नहीं, उससे लंबा पोर्शन है और सलमान खान ही है फिल्म में. अभी उससे ज़्यादा अभी तो बहुत दिन है यार, साल है पिक्चर को, बट बहुत स्पेशल है और बहुत दिल से वो आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली हमें. Thank you. Okay, I have a question. One last question. I have a question to Anushka and Shahrukh sir both. You know, both of you have worked with directors like Yash Chopra, Aditya Chopra, and Karan Johar, who have different language to romance. Taking that question forward, you know, when you see a Yash Chopra or any of their films, it's a love story you want to have. You know, it's an aspirational love story. Whereas Imtiaz's is one which people normally have. You know, people meet on trips and they fall in love. Do you agree with this kind of a love story than the quintessential love story, which is a little larger than life also? I think each one of them, you're right. I think we are both very fortunate to have worked with Yash ji, Karan Johar, Adi, and then Imtiaz. And they all have a very huge bent towards romance and love and relationships more than anything else. But मुझे ऐसा लगता है, जो difference मैंने पहले भी बोला, एक तो जो essence है तीनों का, वो चारों का same है. But I think what is different with Imtiaz is कि you are watching two people interact without having too many spikes in the story, without having too many obstacle and exterior plot points. And कहीं पर मैंने आज ही इम्तियाज़ को बोला, ये जो characters हैं दिल में घर कर जाते हैं. They make a home in your house. I think it's very simple things, very normal moments. लोग बोलते हैं इम्तियाज़ की picture moments के बारे में है, moments के बारे में है. I didn't understand it till I worked with him. That is just very easy viewing, and suddenly you realize you are liking these people as much as they're liking and loving each other. So they slowly seep into your heart without obtrusively telling you a plot point or a story or कि ये दुनिया से झगड़ा करना है. उनका झगड़ा और उनका लगाव दोनों अंदरूनी है. So I find that very different. As far as the essence is concerned, I think Yash ji, of course, and Adi, Karan, Imtiaz, and every other romantic filmmaker or people who believe in relationship films does it with a lot of depth and the same essence of love being the most beautiful feeling. Thank you everybody. And दोस्तों इतना खूबसूरत सा in the interview that we did Anushka has gone to answer. मैंने one-on-one interview किया था तुम्हारे साथ नयनदीप, पर यही जवाब दिया था. Same as mine. The same question he's asked me already once.
You know, Shahrukh, Anushka, बातें तो बहुत हो गई, but since we are all talking about romance, there's a special setup for you. We have made a surprise date for both of y'all, and Yeah.